उसका 32वां अध्याय का विवेचन कर रहे हैं, जिसमें साधुओं के समागम और सत्य शास्त्रों का विचार करने वाले पुरुष को मोक्ष अवश्य ही होता है। इसीलिए मोक्ष स्वाधीन है। इसका युक्तिपूर्वक कथन मोक्ष स्वाधीन है, इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, कल भी आज भी करेंगे। व्यक्ति के पास जो साधक हैं उसके पास क्या चीज़ हो सकता है? दो चीज़ हो सकता है, एक तो विद्या अथवा अविद्या। दो चीज़ से एक चीज़ होगा। तो किसको विद्या और किसको अविद्या कहते हैं? आज सुबह वही बात कर रहे थे। विद्या स्थिरता का नाम है, अस्थिरता का नाम अविद्या। आज वो गुरु जी को मैं कह रहा था, एक पम्पलेट बना करके सब लगाओ, क्या नॉलेज वाइब्रेट्स बिकम्स ignorance, ignorance gets steadied, balanced, becomes knowledge। तो नॉलेज क्या है? स्टेडीनेस का नाम है। विद्या भी उसी को कहते हैं। हम जितने जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं, हमारे जो दैनंदिन जीवन में, इसको सूचनात्मक ज्ञान कहते हैं। इसको हम कल अच्छी तरह देखें, बार बार देख रहे हैं कि इंद्रियों का विषय के साथ जो संबंध, उससे जो जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम ये सांसारिक ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, जो परिवर्तनशील है। उसका क्षय वृद्धि दोनों है, दोनों है। क्षय कैसे होगा? क्षय होगा इस प्रकार, आज जो है, आज जो सूचना हमको मिला, कल के लिए वो नहीं है, इसीलिए वो क्षय हो गया। एक बार वो क्या वो उसो कुछ बोल रहे थे, बड़ा इंटेलेक्चुअल मैन है वो। तो जो बोलता है वो तो उसका वो कहीं दूसरे दुनिया का बातें, उसका समझना भी कठिन है और लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मिसगाइड हो जाते हैं। तो वो कुछ लेक्चर दिया, उसको श्रोता लोग सब रिकॉर्ड करके रखे। 2-4 दिन के बाद वो ठीक उसका अपोजिट बोल दिया। आज कहा गंगा जी उत्तर से दक्षिण को बह रही है, तो 2-4 दिन के बाद बोला कि गंगा जी दक्षिण से उत्तर को बहती है। आज 2-4 दिन के पहले बोला था उत्तर से दक्षिण को बहती है, आज बोल दिया दक्षिण से उत्तर को बहती है। सवाल खड़ा हो गया, गुरुजी आप तो 4 दिन के पहले ऐसा बोले थे, ये रिकॉर्ड करके रखे हम, और आज बोल रहे हो दक्षिण से उत्तर। उसको जैसे अरे बेवकूफो, 4 दिन के बाद की बात, 4 दिन, चौथा दिन तो वो तो चला गया है। उस दिन जो बोला था वो गया।
आज जो बोल रहा हूँ आज के लिए वो सच, 4 दिन के बाद फिर और कुछ बोलूंगा। अरे समय जाता है, परिस्थिति जाता है, सब कुछ चले जाता है, तो उसको पकड़ के बैठ रखे हो तुम। और अगर ये कहा गया, आप लोग बोलो, गंगा जी उत्तर से दक्षिण को बहती है, दक्षिण से उत्तर को बहती है, बोलो बोलो। दक्षिण से उत्तर को बहती है, हाँ जी। उत्तर वाहिनी गंगा को काशी बोलते हैं, जहाँ काशी भगवान विश्वनाथ बैठते हैं। उत्तर को जाना मतलब पूर्णता के प्रति जाना, और उत्तर से दक्षिण को मतलब संसार के प्रति आना। 2 जगह उत्तर वाहिनी है गंगा जी। इधर भी कहीं कहीं उत्तर वाहिनी थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा देर के लिए, परंतु परमानेंट नहीं। तो दोनों सच है, दोनों सच है। और एक सच कल के लिए झूठ बन जाता है, कल का जो झूठ परसों के लिए सच बन जाएगा। तो इसको कहते हैं सूचनात्मक ज्ञान। और ये कैसे मिलता है हमको? इंद्रियों का विषय के साथ, तत् विषयों के साथ जो संबंध होता है, आँख का रूप के साथ, कान का शब्द के साथ जो संबंध बनता है, उससे हमको जो जानकारी मिलता है वो व्यवहारिक ज्ञान कहा गया। उसमें भरोसा नहीं करना। इसको कल हम बहुत बढ़िया ढंग से विचार किए थे। और ये किसी काम का नहीं। तुम्हारे जो पढ़ा लिखा है ना सब, इसको चूल्हा में डालो। क्यों? कौन कहा? उसने कहा। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मेरे को कोई मारेगा। उसने कहा, अब बात तो सही है भाई, ये ज्ञान किसी काम का नहीं। आज जो हम पढ़े, देखो ना, ये साइंस में, विज्ञान में देखो, जो 10 साल के पहले जिसको बड़ा भारी करके ये सच है करके बोलते हैं, बड़ा भारी वैज्ञानिक ये है, वो 10 साल के बाद फिर झूठ हो जाता है। सब चीज़ ऐसे ही है। जो चीज़ हम किताब से पढ़ते हैं अथवा कहीं किसी से सुन करके समझ लेते हैं, वो सारे इंद्रियगत ज्ञान किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, 2 पैसा का भी नहीं। तो आप इसमें एक सवाल कर सकते हो। क्या सवाल करेंगे? करो करो यार, चुप क्यों बैठे? Mataji, we are just recapping. Were you there yesterday? You are here? Oh, we are just recapping. We are discussing on what is knowledge and what is ignorance. Knowledge is of 2 kinds. One is informative knowledge, relative knowledge, which is observed, which is obtained by the contact between the senses with their particular objects. That is what we call knowledge, relative knowledge. And that is momentary, that is subject to change, and that is not real knowledge.
that we can term as relative knowledge or informative knowledge. It is temporary information. It is subject to change. So it cannot be said to be knowledge. It is only information. तो कल हम इसके ऊपर बहुत विचार किए थे और ज्ञान किसको कहते हैं। हम कल ये भी विचार किए थे हमारे दिमाग एक डस्टबिन है, कूड़ादानी, जिसमें जब से हम पैदा हुए, बच्चा जब पैदा हुआ तब से उसके दिमाग में सब कुछ डाला गया। जो कुछ डाला गया वो उसमें रहा, उसी का विस्तार हुआ। और आज कुछ जानते हैं तो कल के लिए और 2-4 उसमें मिल गया, वो मिलजुल करके फिर और 2-4 दिन के बाद और कुछ मिल गया, खिचड़ी पकते रहा। डस्टबिन के बिना और कुछ नहीं। वो सारे जितने जो कुछ हमको ज्ञान मिला ये दूसरों से मिला है, अपना कुछ नहीं। जो अपना कुछ नहीं है तो उसके ऊपर क्या भरोसा रखें। है पुस्तक गता जा विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अपना ही पैसा भले दूसरे के पास अगर है, अपना ही ज्ञान जो किताब में है वो समय पर काम में नहीं आता है। परहस्तगतम धनम और पुस्तकगता जा विद्या वो कार्यकाले समुत्पन्ने, जब समय आता है, जरूरत पड़ता है, न सा विद्या न तद्धनम, वो हमारा काम का नहीं। जो हमको ये जानकारी सब मिलता है ये सब दूसरों से मिलता है, कुछ उसको हम स्मृति कहते हैं। तो इसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हो। वेद का नाम श्रुति है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। आ जाइए। तो श्रुति को अगर आप मना करते हो, ये किसी काम का नहीं, दूसरों से सुने हैं, अपना नहीं है, तो इसके ऊपर सवाल आप ये कर सकते हो। तो फिर शास्त्र पुराण सब झूठ है, उसके ऊपर हम भरोसा ना करें। हम गुरुमुख से सुनते हैं, गुरु का वाणी को भरोसा ना करें। इसका कॉन्ट्राडिक्शन में बोला गया, गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। हाँ, उसको रटना, वही हमारा सब कुछ है। और तुम कहते हो ये किसी काम का नहीं, कैसे भाई। क्यों नहीं करते हो सवाल। हाँ हाँ करते रहना। जो बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना। हाँ ऐसा कहा गया। तोते ने भी किया था। हाँ जब शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे थे, तोते ने हाँ वो भी हाँ जी कहते हैं। नहीं, धोबा कहता है धोबनी को। इसी गांव में अगर रहना है ना, तो बिल्ली ले गई ऊंट को खींच करके, तो हाँ जी करना।
धोबा कहे धोबनी लो इसी गांव में रहना, बिल्ली ले गई ऊँट को खींच के हाँ जी करना, नहीं तो इसी गांव में रहने नहीं देंगे। स्वामी जी अगर हम हाँ जी नहीं करेंगे ना तो आप कल से हमको क्लास से निकाल देंगे। यही बोलोगे? हाँ जी सुहासिनी, श्रीपाद जी, कोई नहीं है ना स्वामी जी, हम लोग हैं। है? हाँ। तो तुम सब हाँ जी भरते रहोगे, सवाल नहीं करोगे? जी स्वामी जी। जी स्वामी तेरी के जी स्वामी जी। अरे गुरु वाक्य गुरुवाणी देखो ना, हमारे नानक देव का ये जो सिख लोगों का वही सब कुछ है, उसमें भरोसा कैसे नहीं करेंगे? कबीरदास का, हाँ कैसे नहीं भरोसा करेंगे? और शास्त्र को भरोसा नहीं करोगे, ऐसा कैसे कर दोगे? तो स्वामी जी, हाँ हाँ जी आप ही तो कहते हो चुप हो जाओ। मेरे डंडा मेरे खोपड़ी में। अरे चुप होना किस लिए? जब चुप हो, एक कहावत है, घूमे सो सूरा बैठा सो पूरा। महात्मा में कहावत है, जो घूमता रहता है परिव्राजक, कहीं रुकता नहीं, वो सूरवीर है। हर किस्म का वातावरण, हर किस्म का परिस्थिति का सामना करना कोई आसान चीज नहीं, वो सूरवीर है। और जो बैठा है, घूमे सो सूरा बैठा सो पूरा, जो पूर्ण है वही बैठता है, समझा? अरे चुप होगा जो पूर्ण हो जाएगा वही चुप होता है। बेवकूफ अगर चुप हो जाएंगे तो काम खत्म। घर में आग लग रखा है और तुम चुप बैठोगे? हैं? सवाल करना तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। सवाल तो करना ही है। जब पूरा हो जाएगा पूर्णमदमिदम, तब तो फिर चुप हो जाओ, उस समय चुप होना। देखो ये जो शास्त्र वचन गुरु वाक्य, इसको इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं कहते हैं, सूचना तो ज्ञान नहीं है। मुँह से निकला कोई बात नहीं, मुँह से निकला जो अनुभव का बात है, ये सूचनात्मक जैसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। गुरु किसको कहा गया? गुरुमुख से जो निकलेगा वो कैसे वाणी निकलेगा? गुरु कहा गया ज्ञान रूप को, ज्ञान को ही गुरु कहा गया। When knowledge personifies, it is called guru. Knowledge personified is known as guru. So whatever we hear from the guru, it is knowledge only, it is not informative knowledge. It is only knowledge. Nothing can come out of his mouth other than knowledge. It is his self. Understood? So it is not informative knowledge. And all these scriptures which are known as Shruti, Smriti, these are not written books. No, it is
from tradition, traditionally it has been brought to us from guru to disciple, disciple again gives it to the other disciples. In this way, traditionally, the absolute knowledge is transferred to us. It is not informative knowledge. First of all, अर्जुन हमारे कृष्ण भगवान बोले, हाँ जी प्रणाम बोलो। हाँ क्या हो रहा है? इंटरनेट रेंज थोड़ा सा कट रहा है। क्या बोलो बोलो क्या हो रहा है? करो नहीं मेरा रेंज का इशू था स्वामी। सबका हो रहा है क्या? सबका या तुम्हारा? बीच बीच में कट रहा है स्वामी। हरिओम, सबका हो रहा है कि सिर्फ उनका हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बाकी कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हमारा नहीं हो रहा है। तो फिर आपका हमारा भी नहीं हो रहा है स्वामी। इंटरनेट को पूछो। सानू की वेद उपनिषद ये सारे, इसको श्रुति कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ये सब परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है। ये कोई लिखित कोई जैसे आधुनिक किताब वगैरह होते हैं, ये नहीं। ऐसा पहले भगवान विष्णु ब्रह्मा को ये ज्ञान दिए। ब्रह्मा फिर उनके शिष्य लोगों को वशिष्ठ, वशिष्ठ फिर शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से फिर व्यासदेव, व्यासदेव से फिर परंपरागत ये ज्ञान। ये तो हमारा एक सेक्शन। ऐसे ही दूसरे सब सेक्शन है, सब अलग अलग गुरुओं का प्रथा सब। ये सारे परंपरा से हमको प्राप्त है। ये अनुभव का ज्ञान है। ये ऐसा सुनी सुनाई या इंद्रियगत ज्ञान नहीं है। इसीलिए इसमें कोई शंका नहीं करना। ये सब अनुभव का है। इसी का नाम ही ज्ञान है। वेद मतलब ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु का वचन में शंका नहीं करना। और जो संत महात्मा लोग जिनका अनुभव का वाणी है, उसमें शंका नहीं हो सकता है। और किसमें शंका करना, किसमें शंका नहीं करना, वो तुम खुद जानते हो। अपने आप को पता चल जाता है कि कौन सा, किसके ऊपर हम भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा ना करें। यू गेट द decision from your heart itself, what is to be believed, what is to be taken as truth, and what is not. Your heart gives you the decision. The knowledge which comes from the heart, it will be accepted by the heart. समझे? कोई बात, कोई तुमको बोलना जरूरत नहीं पड़ता है। You will understand yourself what is to be accepted and what not. Hridayam means universal or individual? हाँ? Hridayam universal or individual? Both.
both universal heart and individual heart. Heart means, yesterday we discussed so much, heart means the empty place. That means full. Empty means full. Zero means everything. That we discussed yesterday. Empty place means where the world is not there, disturbance is not there. That is called empty. That means everything is there. There is no disturbance. Absolute equilibrium or the awareness is known as heart. So it is, if you think it is individual, it is individual, and it is universal also. Knowledge cannot be individual or universal. It is as it is. So heart is universal and individual, both together, both are same. There is no difference. But when we call individual, then there is a difference. Universal and individual, there is a difference. But heart is, there is no difference in the heart. Heart is heart. Awareness is awareness. It cannot be individual or universal. Knowledge is knowledge all the time. It cannot be individual. Individual means limited. Universal means unlimited. Our company is limited company. Understood? Limited. Private limited. Heart is balanced, mind is imbalanced. Yes. Mind is imbalancedness, heart is balance. Heart is the source of all the knowledge. Mind is source of all the informations. Okay? Hridayam means another name is Chidishakti. Huh? Hridayam another name is Chidishakti. Chidishakti. चित्त शक्ति नहीं, चिद आकाश. चिद शक्ति नहीं. चित्त शक्ति को चित्ती शक्ति कहते हैं. चित्ती. Chitti means the power of the chit is called chitti. Power means imbalanced state, vibratory system. Power means imbalanced. Power means motion. Power means changing phenomena. Power means a process. Power cannot be steady. Power cannot be steady. इसके ऊपर सवाल करो, कैसे नहीं होता है. कल जो पेड़ बनेगा, आज तो बीज के अंदर स्थिरता में रूप में रहता है, तो कैसे नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, होगा ना. सवाल क्यों नहीं करते हैं? बोलो. अरे यार, मैं जो बोल दूंगा उसमें हाँ भर दोगे. यही है. क्या है ये?
power in a steady position. Blank paper. This is called the heart. Anything and everything is there, but it is not there also. समझ में आया? Did you follow? Blank paper, we have discussed it so many times. Whatever you write in it, it was there and now it is there. In future it may be there or may not be there. Means there means it was invisible, it is now visible. Visible means subject to the senses. And it is not there means there is no question of manifestation or its expression, or the power is there but it is not manifested. Just like seed. Seed is the source of many future trees, innumerable trees, and past innumerable trees. But yet the trees means the forms and names which are to be or which was there, they are all now in a potential state. That means it is not manifested. So similarly, the truth is, the absolute truth is same thing. Anything and everything is possible there. But yet nothing is possible there. If it appears, it is not real. Really, it is not there on the paper. It appears to be. Paper is always paper. Behind it, the paper is unconcerned, uninvolved. Behind this, the paper is unconcerned. The vision is, vision means the senses. They are, senses means vibratory system. Because it is disturbed, so the disturbance is known as manifestation. Disturbance is known as manifestation. Undisturbed is the truth. It appears, it may disappear also. Whichever is appearing, it will disappear also. Similarly, same thing is told by this creative process. The creation is nothing but it appears and remains for a while and it disappears. That is called dissolution. Creation and dissolution, both are there. If it is just like some impressions created and it is deleted. So don't have any doubt in it. समझ में आया साहेब जी? Heart is always heart. It cannot. How we can differentiate knowledge and ignorance in our worldly life? जी? How we can differentiate knowledge and ignorance in our worldly life? हाँ, वही तो बात. चुप नहीं बैठना, सवाल करना. How to differentiate? How to see the difference?
कहा गया ना, देखो this informative knowledge is subject to change. Change means it is perceived by the contact of the senses with the sense object. कैसे? मान लो कौन पर कांटेक्ट करता है? चित्त जो है वो बीज रूप समझो. The subconscious mind is taken as the seed. The future process is there, but it is not activated. So this is called chitta, the subconscious mind. And when it gets some favorable surroundings, conditions, by time, space and situations, then it starts vibrating. Vibrating means trying to multiply. All the impressions are there, steady. It is not acting. But the moment it gets association, there is something, then it starts vibrating. Vibrating means vibration has got only one motive, one purpose. What is the purpose? It is inherited since the creation starting. I am one, let me be many. Eko ham bahushyama. This is the starting of the creation. So all the creatures, whatever is there in the creation, they are subject to this. Every one starts becoming many. This is the process. This is the creative process. One becomes many. They are hidden, inherited since the starting. And everybody, everyone, every object, every being is subject to multiplication. And that is possible by division, dividing. One is divided, then it becomes, it multiplies. Divisibility is multiplicity, because one is there. One, when seen in many, from many angles, it appears to be many, but it is not many. Can you say 7, a digit, 7? What is it? How to analyze it? By factors. What are the factors of 7? Factors means how it can be divided. One is present visibly, invisibly, in all conditions. One is present everywhere. It is the absolute factor of everything. So, one is present, it cannot be absent. And when it is divided, then only the multiplicity is visible. We say it is multiplied. Anyhow, that one
when it gets the favorable conditions by the help of time, space, situations, conditions, then that means which the subconscious mind which is stable, it starts vibrating. Purpose is to multiply. And how? The vibrations are called waves. Waves are called thought waves. And those every system is known as mind. So waves are created from very subtle to gross. The process is from subtle to gross. Everything, everywhere, all the process. The subtle most becomes the gross. And gross is visible, and we call it manifested or projected out or visible, and which is subtle most, which is not visible, it is not manifested, as we say. So what happens? Those thought waves are of different category. So most subtle ones, they are called the intuition, or the we call it memories or impressions, subtle most. Intuition. And slowly when they become gross, they are known as, they are called ego and intellect, and then it becomes mind. Same process. And then mind, when it is vibrated, it has to, one, energy means vibration means one stimulates the other to go on. That is how multiplies. One gives a momentum to the other. Waves, if one wave is created, that means the imbalance state is created, that means the height is there, lowness is there. So that lowness again stimulates the other surface to go high. Again the other surface creates the lowness, so it goes on. This is the nature. So it cannot be one, it will go on multiplying. That is what is known as energy. And that we call in different words, different from different angles. We call it energy, we call it power, we call it Maya, nature, प्रकृति, स्वभाव, ये सब कुछ हम ऐसे बोलते रहते हैं. कुछ कुछ बोलते हैं पर प्रोसेस इज द सेम. One process, vibratory process and changing process. The whole world is based on this process. Whole creation. It has to change, it has to multiply, it has to have time, space and condition. Time means one is gone, it is past, the creation is destroyed. That means the height has come below to become low, and again it will go up, again it will come down. So that means imbalanced state is created, means it will go on. That means changing and creating and dividing, same thing. And this is how the creation goes on.
whole creation, everywhere, everything is based on this process only. And this is known as energy. One is named differently in different phases, different actions, different visibility. Names are different, but process is the same. Vibratory system, changing system. तो हुआ क्या? This change, the mind gives a push to senses. Senses, they have to act. 5 senses of knowledge. So particular senses have particular objects. Say, eye has to contact with the form. The ear has to contact with the sound. Similarly, it goes on. The skin has to contact with the touch, air. In this way, all these 5 senses, they are the mediocres, they are called windows, they are called the way to go out. The vibration go through these windows. They are the gateway. The vibrations should go. It is a motion. So it has to go on. So it has to go from in to out. In means inside the body. Let it be brain or mind, your senses. Then it is inside body, it has to go out of the body. And out of the body, there are objects of different senses. All the objects which are within names and forms, all the forms have the names, that is called world, and all the objects will have a form, and it will have 5 units of knowledge. What are the 5 units? Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. That's how the mind is able to get the information from the objects of the senses. The thought waves have to go through the eyes, and it is obstructed by a form. That form is object. So, when it is obstructed, it is stopped, then it has to come back. Thoughts, waves, they work as boomerang. Boomerang, the old Australian weapon, when it is discharged, it has to come back to the sender. It has to. So the thoughts, when they are in the whole creation, everything is like that. Light and this vibrations, whatever is in motion, if it is stopped, then it has to come back to the source. That is the law of nature. Anything, any motion, it has to come back to the source, where from it has been started. So thought waves, when they go out of the senses and they are obstructed by the particular objects, then they have to come back to the source through the same gateway. So when they are objected or obstructed by the object, a momentary association is taken place. Momentary association. That moment, the
association of the thought wave with the object, it gets associated and for a moment it comes back. So that particular moment it collects some information about the object, how it is, what it is, any kind of some information it holds by the association. When you touch this, then only you know whether it is cold or hot. That is called association. The moment you touch it, then the touch gives the information that it is cold or hot. Similarly, the form, it is colorful or hard or soft, something, some information about the object. It is brought back through the same gateway and given back to the source, to the subconscious mind. And that is stored in the form of impression. Impressions are nothing but just like this. This is called impression. Or if you have written something and deleted it, rubbed it out by rubber or something, the impression will be there. Impressions are so subtle, they are there always everywhere, and they are collected by the senses and stored in the subconscious mind. They are called the seeds. And the subconscious mind is nothing but a storehouse of the seeds. Storehouse of the seeds, and innumerable seeds, impressions are there stored. And when they get some chance, means favorable conditions around it, then again they vibrate and again they do the same thing, repeat the same thing. To go out. Why? Because the tendency is hidden there to multiply, to be repeated. So again it will go out, again it will collect these impressions. This is called memory or impression, whatever you can call it. So in this way it goes on repeatedly multiplying. This is how we get the knowledge of the relative world. So all this knowledge is momentary and subject to change. अब आई समझ में? स्वामी जी, जितना इम्प्रेशन से डस्टबिन में भरा हुआ है, इसको कैसे फिर खाली करें, कैसे यही तो बात। ये कचरा पट्टी को खाली करना, यही जो सूत्र में, और सारा यही तो सत्संग, इसीलिए तो ये सब करते हैं। हम रास्ता ढूंढते हैं कैसे खाली किया जाए, कैसे खाली किया जाए। राजयोग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया और कर्म योग बताया। कितने योग है कोई ठिकाना नहीं, सब क्या कुछ ना कुछ बताया जाएगा, सब में कुछ ना कुछ बताया जाता है प्रोसेस। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज योगाज। योगा मीन्स यूनियन। Yoga is nothing but a bridge, a staircase. You unite with the Absolute. So union is you have to give up something and accept something. That is how you have to walk. You have to climb the staircase. You have to give up something
and accept something. That's how you can progress. How do you walk? You have to forget the past and accept the future. That's how the time, space, conditions and progress, that is called evolution process. Every moment, by every way, we are bound to give up something and accept something. And that is known as time. That is known as action and reaction. That is known as cause and effect. Call it as you like. The process is this. So every moment, sadhana also is the same thing. And this is called in different terms. Tyaga, tyag karo, tyag, 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 renunciation, renunciation, give up. So when you can give up everything, then only you can be stable. And stability is the knowledge. So you have to give up everything. That is the fundamental motive of sadhana. You have to give up everything. And that is given to us in different ways. They are different yogas. Giving up, उसी को हम नेति नेति भी कहते हैं, नेति नेति डॉक्ट्रिन. Give up, giving up, that is also called renunciation. We do it unknowingly, forcibly, by the nature, we do it. But what happens when we give up something, we accept something? That acceptance should not be there. Then it will go on. If you can give up everything, that is called negative, not doctrine. Don't accept anything. Give up everything. Give up, giving up also. In the end, you have to negate the negation. And then whatever remains, the remnants is the absolute equilibrium. No accepting, no giving. That is the process. And because we have stored so much garbage in our dustbin, somehow or other, throw out as much as you can. Go on emptying it. कर सकते हैं? हाँ भाई. उसी को तो हम कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध. और क्या कहते हैं? हाँ, वृत्तियों का, वृत्ति मतलब ये वाइब्रेटरी सिस्टम, वेव्स, थॉट वेव्स, उसको निरोध करना, स्टॉप इट. And when it is stopped for a long time, then just as the seeds are kept without sowing in the field, if the seeds are kept for a long time, that potency gets lost. That is how when the mind stops for a long time, that means technically when concentration is prolonged, it is known as meditation. When the meditation is prolonged, then it is called samadhi. When samadhi is prolonged for a long time, concentration as per some method,
It is not always right, or we can take it for granted. 24 seconds, up to 24 seconds, if the mind stops, that is called concentration. And from 24 seconds to 24 minutes, during that period, it is known as meditation. And beyond 24 minutes, if the mind is steadied, absolutely constant, then that is called samadhi. And if samadhi is hold on for at least 7 days, then it is established. It cannot be disturbed anymore. At least 7 days. That is the, from relative point of view, it is not the absolute, we can say, accepted by everyone. Relatively, we have some calculations. So, after 7 days, samadhi becomes established. If the person remains as a stone for 7 days, then that is, though it comes back to vibratory system, that means it comes back to the mental state and eating, drinking or moving on, all these, they will have, all these actions will have no impact on its mind. Mind will not be disturbed. What to speak of that? The great saints have given this opinion. If your mind is stopped for 1 minute, that means if you really meditate for 1 minute, 1 minute is meditation, beyond 24 seconds. So that if you can meditate for 1 minute, guarantee for 7 days, nothing in this world can disturb your mind. Nothing can disturb you. Let there be fire in the world. Let the whole world go to hell. You will not be disturbed, you will not be perturbed. That is the power of meditation. But we sit and sleep. That is how we show people we are meditating. Our meditation is something else, but real meditation is called this. 1 minute meditation gives you so much strength. No world can disturb you. That means it is so steadied, it cannot be perturbed by any vibrations from any side. Mount Meru, let there be storms, let there be tornado, but the mountain is mountain. It cannot be disturbed. अभी हमारा जो विचार चल रहा था, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या। अविद्या इसी को हम कहते हैं जो मन से अथवा बुद्धि से जो व्यवहारिक सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं, उसी का नाम है
उसका नाम है अविद्या, अज्ञान कहते हैं इसको। हाँ, तुम घमंड नहीं करना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, किसी काम का नहीं। कल कहे थे ना, माचिस लगाए थे, आज फिर निकल गया। हाँ, कल जलाए थे, उसका लगाओ आग, तुम किसी काम के नहीं। कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी तुम रटे, अरे तुम्हारे वैज्ञानिक लोगों का ऐसी की तैसी, कोई कुछ नहीं जानते। कौन जानकार है? जो कुछ नहीं जानता है वही जानकार है। जिसका दिल बिल्कुल शांत है। भगवान कृष्ण कहे ना गीता में, जब सुखम शांत चेत साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणो समम समधि गच्छति। जिसका मन शांत हो गया, बिल्कुल विचलित नहीं होता है, वही है ज्ञानी। और उसका ज्ञान को हम मान सकते हैं। और जो एम्प्टी वेसल से साउंड मच, जो बहुत लेक्चर देते हैं ना, जैसे हम गधे, दो गधे ना, दो गधे, एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला, दो गधा गोपाल नंदन। दो गधे, बोलने वाले भी सुनने वाले भी। लेकिन यह हमारा परंपरा इसीलिए आया, बोलने वाला कुछ बोलता है वो सच नहीं है, सुनने वाला कुछ सुनता है वह सच नहीं है। परंतु एक परंतु तो सब जगह पर है। बोलने वाला जो बोलता है उसका लक्ष्यार्थों को समझना चाहिए। लक्ष्यार्थ कितने बार हम बोले कि अंगूठे में अंगुली दिखा करके जब पेड़ के ऊपर बैठा हुआ वो कबूतर को हम दिखाते हैं, तो अंगुली को नहीं दिखना, कबूतर को देखना, पेड़ को देखना, पेड़ के अंदर वो कबूतर को देखना। इसके ऊपर सुंदर एक कहानी है, वो कहानी सुनाएंगे आज के लिए। है कहानी क्या था? अर्जुन की कहानी। अर्जुन, क्या हुआ, पांडव और कौरव ये 105 भाई सब गुरुकुल में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। माता जी स्टोरी। how to see one pointed vision, and that is the indicated meaning, that is to be seen, not the indicator. The indicated object should be seen, not the indicator. When I pointed out my finger towards a bird sitting on the tree, don't look at my finger. It is not the subject. You have to look at the tree and the bird sitting on there. That is called indicated meaning, and finger is indicator. So all these, whatever the great people tell us, their words are indicated. We have to understand the indicated. लक्ष्यार्थ कहते हैं। Indicated meaning should be understood, not the words. Words are meaningless. The language is meaningless, but it is used to
indicate something. When I said the paperweight, what will you say? Will you record the sound and use it as paperweight? When I said use a paperweight, the papers are getting disturbed, use the paperweight. So what do you mean by paperweight? Paperweight, from my mouth, what the sound comes out, it is only a sound, a language. It has got no meaning. Unless and until it is related or associated or indicated on some object, the words have got no meaning. When it is related with this, then this is called paperweight, not the words. So, this is indicated meaning. Words have got no meaning. Similarly, whatever language we use, they are all are only indicative. They have no meaning really. Sound is sound. Just as you hear the murmuring sound of Ganga, what do you understand? But there is meaning. You hear the birds making some sound. Do you understand anything? But they have got meaning. And the honey bees, they make some sound on the flower. What do you understand? They have got meaning. But meaning is indicated. The sound has got no meaning. What I say, the target should be seen, not the process. The indicated object should be seen, not the indicator or indicating method. अर्जुन का कहानी, वो सारे पांडव कौरव सब गुरुकुल में पढ़ाई के लिए गए थे, शस्त्र अस्त्र विद्या सब सीखे, और कुछ दिन के बाद फिर परीक्षा होगी। परीक्षा होगा तो एक बड़ा भारी ग्राउंड में ले करके एक एरिना बना गया, और उसमें चारों तरफ एक जैसे स्टेडियम बनता है, राज परिवार के और सारे दूसरे लोग सब आकर के बैठे हैं, सब देखेंगे हमारे बच्चे क्या सीखे हैं। अस्त्र शस्त्र सब विद्या सब सिखाया जा रहा है, अब दिखाया जा रहा है। मल्ल युद्ध और तलवार, भाला और क्या नहीं, सब कुछ सब सिखाया जा रहा था, सब दिखाया जा रहा था, कोई किसी में कितना मार्क रखते हैं, सब दिखा रहे हैं। तो आखिर आया लक्ष्य भेद, बाण, धनुष बाण का विद्या दिखाया जाएगा। तो आखिर वो दूर एक एरिना से दूर एक कहीं पेड़, बड़ा घना पत्ते वाले एक किसी पेड़ के अंदर कहीं एक मिट्टी का तोता बना करके, एक खिलौना तोता बना करके रखा गया, और उसके दूर जैसे हम ये क्या वो स्पोर्ट्स में करते हैं ना, लक्ष्य भेद करते हैं, वैसे ही
तो कुछ दूर में एक जगह रखा गया, एक स्थान, वहीं से सब वहाँ वो चिड़िया के आँख में तीर लगाएंगे। तो सबको बुलाया गया एक एक करके। तो गुरु जी, द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे हैं। एक एक करके सबको बुलाए, उधर खड़ा कर दिए, जहाँ से तीर मारना है उधर खड़ा कर दिए और उसको प्रश्न किए, देखो बेटा इधर खड़ा हो करके उधर देखो, वो जो पेड़ है, तो पेड़ के देख रहे हो तुम? हाँ देख रहा हूँ गुरु जी। तो वो पेड़ के अंदर उस जगह पर देखो एक तोता बैठा है, देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। उसके दो आँख देख रहे हो? हाँ। एक आँख में तीर लगाना, लगा पाओगे? हाँ गुरु जी लगाऊंगा। हो जाओ, खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। रेडी, 3, 2, 1। अब बोलो, तुमको क्या दिख रहा है? अभी शूट नहीं कहा गया, कहा अभी तुमको देख, तुम तैयार हो? हाँ तैयार है गुरु जी। क्या दिख रहा है बताओ ना। आप खड़े हैं और इतने लोग सब बैठे हैं, वो पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ के अंदर वो पत्ते टाइनियाँ सब, और उधर पेड़ वो बैठा है, कौन? तोता बैठा है, उसका आँख, सब कुछ दिख रहा है। हो गया बेटा, जाओ। ऐसा एक एक करके सबको बुलाया गया और कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बोलता है। गुरुजी मेरे को तो अभी खाली पेड़ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, पेड़ के अंदर चिड़िया? हाँ दिख रहा है। चिड़िया का आँख दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा जाओ। आखिर सब ऐसा करके सब के सब फेल। आखिर अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन आओ, तैयार हो जाओ। तैयार है गुरुजी। रेडी हो गया? तैयार? जी गुरुजी। क्या दिख रहा है तेरे को? मुझे एक आंख दिख रहा है और दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा है। सूट लगेगा। लगेगा। तो इसका मतलब एक लक्ष्य को देखना, तभी तो आंख बंद करते हैं। और घोड़ों को तभी तो किनारे से सब लगा देते हैं, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ये इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, इनको बंद करना चाहिए आंख। तो इसी प्रकार वह अर्जुन उसको जैसे लक्ष्य भेद किया। इसका कहने का मतलब ये तो कहानी है, घटना, लेकिन जब तुम लक्ष्य को, एकमात्र लक्ष्य को देखोगे, उस समय वो लक्ष्य तुम्हारे सिद्ध हो सकता है, शुद्ध होगा, हो करके रहेगा। लक्ष्य से अगर भटक गया तो फिर नानात्व में फंस जाओगे। इसी को कहते हैं रिलेटिव नॉलेज। इसी को कहते हैं रिलेटिव नॉलेज। वो पेड़ का ज्ञान भी है उसके पास, उसका पत्ते भी दिख रहे हैं, और एरिना में कितने लोग बैठे हैं वो भी दिख रहा है, गुरु जी भी दिख रहे हैं। तो क्या है, कुछ एक दिखेगा तो वो कहाँ तीर लगाएगा? तीर कहाँ लगेगा? इसका नाम है लक्ष्य भेद। लक्ष्य भेद मतलब लक्ष्य एक होना चाहिए। और इसीलिए हमेशा कहा गया
जो लक्ष्य को भूला नहीं वो अवश्य लक्ष्य भेद करेगा। तो हमारे जो जिंदगी का लक्ष्य है एक अखंड आनंद का प्राप्ति, हमको मिलता है तो आनंद, लेकिन टूट फूट जाता है, आधा अधूरा। सुख मिलता है, सुख के बाद दुख, और वह सुख अनेक किस्म के समस्याओं को लेकर के आता है। कितनी आशाएं बढ़ जाते हैं, कितनी समस्या बन जाता है, लेकिन हमको वो सब नहीं चाहिए। हमको अखंड अनंत अनडिस्टर्ब्ड निष्कलंक आनंद चाहिए। वो लक्ष्य जब सामने है तो फिर दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, दुनिया नहीं दिखेगा, दुनिया दिखेगा नहीं। त्याग तो इसी को कहते हैं, इसी का नाम त्याग है। देखोगे तो पकड़ोगे, नहीं देखोगे तो ये जो लुका चोरी खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक, यही है गेम। You should not see all this world, and you should see only one target, that is the goal. Other than that, nothing should be seen. That means nothing should be contacted. So all your senses should be stopped. That is what is called in Yoga Sutras, stop your mind. Yoga chitta vritti nirodha, to stop the vibratory system of the mind. Don't allow the mind to work. Stop it. So that article knowledge and all other process is process, it is not the final, and all these are called relative knowledge, which is known as ignorance. Ignorance means it can change. It changes every moment, it changes. What you know today, tomorrow is something else. That is not called knowledge. Now somewhat clear what is called avidya and what is called vidya. Vidya is knowledge, avidya is relative knowledge. कुछ तो हो गया ना, समझ में आया भैया? और ये जो हम बीच में हम कह रहे थे, ये सुनी सुनाई बातों को विश्वास नहीं करना, वो ज्ञान नहीं है। परंतु सुनी सुनाई बात हमेशा एक परंतु सब जगह पर लगता है। हर चीज में एक परंतु, परंतु के बिना हम बात नहीं कर सकते हैं। परंतु लग गया तो सब बातों का सफाई आ जाता है। हमेशा परंतु। तो परंतु किसी की बात नहीं सुनना, सब झूठ। परंतु गुरु वाक्य को सुनना, गुरु का वाक्य जो है वह सुनी सुनाई नहीं, वह अंदर की आवाज है, उसको सुनना चाहिए। शास्त्र वचन को सुनना चाहिए, वो सुनी सुनाई बातें नहीं, वो अनुभव की बात है। कल जैसे हम विचार किए थे, जो अनुभव का ज्ञान है वो सुनी सुनाई बातों के ज्ञान के साथ बराबरी नहीं है, बराबर नहीं है। जो अनुभव का ज्ञान सच्चा, जो बदलता नहीं, और जो सुनी सुनाई बातें हैं, कल गंगोत्री के बारे में बात हुआ था ना,
गंगोत्री के बारे में हम कितनी भी सूचना हम प्राप्त कर लें, वो सारे आधा अधूरा। जो गंगोत्री में रहता है 12 महीना 10 साल से बैठा हुआ है, उसको मालूम है सारी चीज़। गंगोत्री में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, कैसे दृश्य कैसे बदलते हैं, और रात दिन का दृश्य कैसे होता है, हवा कैसे चलता है, गंगा जी का पानी का लेवल कैसे बढ़ता घटता, गंगा जी के किनारे कैसे जो गर्मी में गंदा पानी दिखता है और शीतकाल में कितने साफ और किनारे बर्फ बन जाता है, और पशु पक्षी कीड़े पतंगे पेड़ लते मिट्टी पत्थर कैसा है गंगोत्री का, हर चीज़ के बारे में जिसका अनुभव है, वो जो उसका जो ज्ञान है, तुम कितने भी पढ़ लो, ये टूरिस्ट मैप में देख लो, टूरिस्ट बुक में पढ़ लो, कितने भी इंफॉर्मेशन गाइड लोगों से सुन लो, वो सब आधा अधूरा। उसका जो ज्ञान है उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो ये कहेगा कि शीतकाल में भले ठंडा तो बहुत होता है, माइनस में जाता है बहुत, लेकिन बाहर तो ठंडा, पेट रहता है गर्म। इसको तुम मानोगे? मान लोगे ये चीज को? कोई क्या वो तुम्हारे टूरिस्ट बुक में लिखेगा? ये अनुभव की चीज है। गंगोत्री में जो 12 महीना रहते हैं, शीतकाल में नींबू शरबत पीते हैं। क्यों? पेट गर्म हो जाता है। ये अनुभव की ज्ञान को तुम टूरिस्ट बुक से नहीं पाओगे। ये अंतर है, ये है अंतर। अनुभव की ज्ञान और सुनी सुनाई ज्ञान में दुनिया के ज्ञान सब, you know, one who stays there for 10 years, since 12 years, he knows everything, he has experience in Gangotri. And whatever information you get from the tourist books or you hear from guides and other people, that is not enough, that is not full, that is not perfect. I experience the rice. I experience eating the rice. That I experience the rice. Whatever you write, that is wrong. Right is wrong. Why? When the experience is expressed, it is modified. It takes the support of many things. So it gets contaminated. It gets impure. It gets supported by others. When the experience is expressed, that is not complete, that is not perfect. Whatever you feel, it cannot be expressed exactly as it is. It can be expressed, but it will be something other than the modified or transformed or different from your experience. Language is the medium, and your vocabulary capacity, your expression capacity, your language, all these counts. They have what impact on your experience, what is expressed. So,
इसको अगर कहेंगे, अभी तो टाइम हो गया, when the experience is expressed, that is called world creation. It is created. Created means it is not the original. It is created. Original is something else. Created means it is modified or transformed or added or deducted or something. Whatever you do, you cannot express your experience. So on this you can again question, if it is so, then how can we believe the words of Guru? He expresses his words, his experience is expressed, then how can we believe the words of Guru? How? He has experienced. I told just now Arjun's kahani. Whatever Guruji expresses by the words, we have to take the indicative meaning of the words of Guru. So if this is the case, then again question arises, why not hearing everyone and getting the indicated meaning? That is what is needed. You can hear a fool also, but you must not know the indicated meaning. Then you can hear anyone and everyone. No objection. Even why to go to human beings, why to go to animals, go to Ganga. Hear the continuous sound. You will understand everything. But continuously you have to hear it. And that's how the hearing of your anahat sound is an exercise given to the students. Hearing your anahat sound. If you go on hearing, you will understand the indicated meaning. Any sound. Why to go to only sound? Any touch, any relative knowledge, if it is constantly looked upon, constantly, without break, that is the secret. If the sense gets contact with the object, it gets contact for a moment, and it getting objected, obstructed, it comes back. But if it can be contacted continuously for a long time, that is called Sanyam in Yoga Sutra. Sanyam means if the mind remains there, the thought remains on that continuously, doesn't come back, then it gets one with the object and it gets all the knowledge. That is called perfect knowledge. Any relative knowledge, any sound or any touch or form or anything, if it is continuously contacted, then that brings you the perfect knowledge, the experience of it. That is how one gets the real knowledge. Because of disturbance, because of discontact, we get haphazard knowledge. So why only Guru's words? Anything, what is continuous, that is perfect. What is disturbed, that is imperfect. Disturbance is called creation, world,
And continuation is known as truth. Akhand. Dhruv, continuous. Continuation of continuity is known as eternal, and that is the truth. And disturbance is called the world. When the truth is somewhat known as disturbed, that is called world. Yesterday we were discussing, when the water is disturbed, it is called wave, but wave is nothing other than the water. Don't see the wave, don't be concerned with the wave. Have your relation with the water, not with the wave. Wave is water, water is wave. There is no difference. But wave is disturbance, water is not disturbance. That was the difference. Wave is world, water is God. So tomorrow we shall see further. Thank you, Hari Om. हाँ भाई, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं स्वामी। आज ज़्यादा अंग्रेजी में बोल दिया, कल तो अंग्रेजी चलेगा। नहीं अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। सीख रहे हो? अच्छा, सुनते सुनते हो जाएगा। करत करत अभ्यास। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।